करती थी, and you were a toy for the relatives around. And you said that that was your first acting workshop. Yeah. She would say, my sister was just 2 years older than me. She would, पढ़ने के लिए ऊपर के कमरे में हम लोगों को भेज दिया जाता था. We had to study there. तो जब वो बोर हो जाती थी, she was a serious studious type. I was the dreamer. कभी मतलब drawing books and other things and तो वो जब हम छोटे थे, she would tell me when she would get fed up of a lesson, she would say, चल दीपी, okay, come on now. चूची बन जा. चूची बन जा means become stupid, become like a moron, and I would start stuttering, I would तुतलाना शुरू करती थी. तो मैं उसको entertain करने के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती थी तोतली ज़बान में. That was चूची बन जा. And then when she would had her laugh, then she would say, अच्छा ठीक हो जा, and I'd be completely normal, go back to my book, and she would go back to her. So I've said in the book, I did say that I think because मैं trained actress नहीं हूँ, मैंने कहीं schooling institute में acting नहीं सीखी कभी भी, तो मेरा ख्याल ऐसा है कि वो जो चूची बन जा ठीक हो जा days थे ना, वो मेरी earliest workshops in acting थे. Well, the picture of Deepti Namal that comes to everybody's mind, a sophisticated, a cultured phenomena. And while a lot of people were growing up, उन्होंने जो सबसे पहले the concept of simple love, integrity, वो शायद मैडम आपके रिफ्लेक्शन में देखा है. But audience, can you believe she ran away from home at the age of 13 to Kashmir? उस ज़माने में जिस फिल्म को देखो उसमें कश्मीर में शूटिंग होती. वो डल लेक और चिनार के पेड़ और दोज वादियाँ और पहलगाम और गुलमर्ग हर फिल्म में होता था. सो व्हेन आई वाज 13 आई थॉट ये अमृतसर इज़ नॉट द प्लेस टू बी इन एट ऑल. ये क्या जगह है, ये क्या है, ये शहर है और बिल्कुल बकवास. आई वांटेड टू बी इन अ प्रिटी एनवायरनमेंट. I wanted to be in the valley of Kashmir, and I was exactly 13 when I ran away from home. Of course, मुझे पठानकोट तक भी मैं पहुंची और मुझे वहीं से पकड़ के वापस ले आया, and I couldn't make it. I didn't make it to Kashmir, and thank God for that. I mean, the story goes on a little on the other side also, what my parents must have gone through that night. But ये इस तरह का फितूर जो था वो नेचर के लिए था. मैं मुझे बचपन से I was a nature lover. I was a dreamer. So you can say all the wrong adjectives लगा दो तो you'd be able to understand a little bit कि वो as a teenager क्या मैं मतलब क्या रहा मेरा जहन. मैडम, जब 13 साल की उम्र में अपने एडोल्सन को आप जब इस बुक के तौर पे, इस बुक के फॉर्म में जब आप रिफ्लेक्ट करती हैं, आई थिंक जब आप रीडर्स आप इसको पढ़ेंगे यू कैन फील इट. और जब आप कहती हैं ड्रीमर, यू बीन ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग योर लाइफ, एंड शायद उसी का एक बाई प्रोडक्ट है कि वी कैन सी दिस रिफ्लेक्शन इन अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्म. यू बीन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस स्टोरी दैट यू विल राइट सम डे, एंड दिस हैज़ बीन सो ब्यूटिफुली डॉक्यूमेंटेड. Yeah, definitely one thing I can tell you, when I left, I think ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं if I had continued to live in Amritsar, never moved out, this book would not have been the same book. But because I had the chance of going away to America, looking back at my life and seeing the exotica there, seeing the beauty of that chaos, the beauty of those private moments of a child जो कि अपनी इमेजिनेशन में होते हैं. हर बच्चे के जहन में एक वर्ल्ड होती है, वो उसकी अपनी होती है, वो इमेजिनरी भी होती है, कुछ हेलुसिनेटरी होती है. बट when I looked back at things, I felt, oh my God, there is so much that I would like about my childhood in Amritsar that I would like to share.
with the readers because uh, there was there was a lot there जो कि वहाँ रहते हुए नहीं समझ में आता था, बट थोड़ा डिस्टेंस जब क्रिएट हो गया तो in reflection I felt it was tremendous time that I lived through. उसमें बहुत कुछ है, उसमें the history, I mean the political scenario of my hometown, उसमें कई कुछ है, wars हैं, जलियांवाला बाग है, border है, पाकिस्तान 65 की लड़ाई है, लद्दाख 62 चाइना वॉर है, कई कुछ है. सो ये सारी चीज़ें that I got a bird's eye view, perspective changed when I moved out. I think that's why this book kind of resonates that way. And also the narrative of disposition from Amritsar to New York and then back to Bombay. Do you think it has changed your perspective in the choice of films that you have made? Because you have made a parallel cinema movement. Yeah. I don't know if it has anything to do with Amritsar or moving, but definitely when I was in Amritsar, when I was growing up, I was there till 18 years of my life. I spent there, the kind of cinema we were exposed to, the kind of films we saw. इस तरह की romantic filमें और Pran was the villain and Shami Kapoor and everybody was always going to Kashmir. तो वो इस तरह की चीज़ें simple सी films होती थी और अच्छी wholesome होती थी. उसके बाद में जब मैं अमेरिका में गई और मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ कॉलेज शुरू किया तो डेफिनेटली जब वर्ल्ड सिनेमा सामने आता है तो आपका नज़रिया बदलता है. आप आई वॉज नॉट एबल टू लुक एट एक्टिंग भी किस तरह से होगी और किस तरह से होनी चाहिए और हो सकती है. दोज आइडियाज़ ऑल्सो चेंज्ड. इट चेंज्ड my views of what good cinema, bad cinema, good acting, bad acting, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई बिकॉज अमेरिका में जाके जब बाहर जब काफ़ी सारी और फिल्में देखी तो ये चेंजेस आए. मैडम यू हैव बीन ऑलवेज सिनेमा इंथुजियास्टिक, अगर हम इस तरीके से बोल सकें. दो तीन इंस्टेंसेस बुक में मैडम ने मेंशन किया है. एक जब you watched a film and you didn't like because उसमें बहुत सारी मारपीट थी and the next time you didn't go to watch but जब वहाँ से आपके cousins लौट के आए तो you regretted. वो इंस्टेंस शायद मैं बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाऊँगी लेकिन मैडम अगर आपके मुंह से सुनेंगे आई थिंक तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा. The first film I would request the audience at the back if you can maintain. I assure you ये सेशन हम जल्दी ख़त्म कर देंगे. Just give me few minutes, okay? ये जो मेरी पहली फिल्म थी मेरी लाइफ की, it was called दुर्गेश नंदिनी. It was released in 1956. I was 4 years old. तो गए और मुझे तो इतना कुछ उसका फिल्म में इतना क्या हुआ वो सब याद नहीं. मुझे इतना याद है एक दो तीन सीन्स थे जिसमें तलवारबाजी जो है एंड आई वॉज पेट्रिफाइड एंड आई वॉज हॉरिफाइड. कैसे लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, टू हर्ट ईच अदर, हर्टिंग. सो आई वॉज लाइक सो स्कैंडलाइज बाय दैट. व्हेन आई केम आउट ऑफ द फिल्म आई डिसाइडेड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट. नेवर गोइंग टू सी अनदर film in my life. I will never go to a movie theater. I will never see anything like this ever again. उसके बाद अगला सीज़न हमारे बहुत से कज़न्स दिल्ली से आते थे गर्मी की छुट्टियों में तो वो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं पिक्चर देखने जा रहे हैं. आई वाज टेलिंग माई सेल्फ लिटिल डू दे नो, जाने दो पिक्चरों में क्या होता है इनको पता चलेगा. तो जब वो लोग मैं किसी बहाना करके मैंने कहा ममा को मेरी बहुत पेट दुख रहा है ये वो. ममा सेंट मी बैक होम. तो मैं घर वापस आ गई एक्टिंग करके अपनी पहली शायद एक्टिंग फर्स्ट परफॉर्मेंस तो वापस आ गई. तो जब ये सारे कज़न्स घर लौटे तो वो तो उछल कूद रहे हैं, गाने गा रहे हैं, छलांगे दौड़ंगे यू नो. तो आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड टू देम. दे सेड they saw a Shami Kapoor film and it was full of songs and dances and music and I told myself, I said, oh, if this is what it is going to be, I will
never ever in my life miss another film, and I will never ever do acting. वो जो पेट दर्द की जो एक्टिंग की थी वो उस तरह की मैं कभी नहीं. तो इस तरह की चीज़ें जो बिगिनिंग का मेरा जो जर्नी सिनेमा के साथ रहा वो इस तरह की उबड़ खाबड़ चीज़ों से रहा. Madam made a promise that she would never miss a film. You missed classes. You bunked classes to watch movies. हाँ वो सब बाद में. When you are when you finish school से तो भागना possible ही नहीं होता. तो जब 11th was our college, we were in prep, which is the 11th standard, but we were dying to get out of school क्योंकि 11th में जाते ही हम लोग क्लास में थोड़ी बैठेंगे, हम तो सिनेमा हॉल में बैठेंगे. तो इस तरह का वो शुरू हुआ दौर जब भाग भाग के सब फिल्में देखी. मैडम बहुत ही खूबसूरती से आपने एक जगह डिस्क्राइब किया है कि आई वुड सी ऑन दी पर्दे पे आप खुद को इमेजिन करती थी. यू वुड स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ एन एक्ट्रेस. व्हाट मेड यू एक्चुअली you've been always a cinema enthusiast, but what was the trigger point कि मुझे actress बनना है? I used to be a big मीना कुमारी fan बचपन से, क्योंकि आई थिंक ममा को बहुत पसंद थी मीना कुमारी, और हम काफ़ी सारी मीना कुमारी राजेंद्र कुमार जी की फिल्में हमारे हिस्से में आती थी काफ़ी. तो मुझे बहुत पसंद थी मीना कुमारी, और मुझे लगता था कि शी इज़ द अल्टीमेट woman. I was a big admirer of my own mother because she was so beautiful, gorgeous looking. और my mother was a painter. ये किताब के पीछे जो पेंटिंग है घर की छत है और मस्जिद है जो साथ साथ लगी हुई हैं, और इस छत पे मैंने 18-19 years of my life I slept on this terrace every night. So my mother was a wonderful painter. She was beautiful to look at and wonderful soul, of course. लेकिन मेरी स्क्रीन आइडल सबसे पहली वो मीना कुमारी थी. तो जब मैं देखती थी, I was maybe 8 years old at that time, मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं वहाँ पे होंगी बड़े पर्दे पर, एंड ये जो ऑडियंस है मेरे साथ बैठे हैं लोग जो हंस रहे हैं रो रहे हैं, स्टार्स जो एक्टर्स के साथ वो दुखी होते हैं, तो एक दिन ये लोग मेरे साथ हंसेंगे रोएंगे, मैं दुखी होंगी तो ये भी दुखी होंगे, मैं हंसूंगी तो ये हंसेंगे. तो इस तरह का हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होगा, मेरा एक इमोशनल कनेक्ट होगा विद द ऑडियंस. तो ये मेरा ड्रीम था. मुझे तब नहीं पता था कि फिल्मों में आप जाने से आप फेमस होगे, आप ग्लैमर या कोई यू विल अर्न लोड्स ऑफ मनी, ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे लगता था कि कनेक्ट होगा, दिस विल बी द कनेक्ट विद द ऑडियंस. सो आई वांट टू बी अप देयर and everybody will be able to relate with me. This was my big dream. So ma'am, you begin the book by saying that stories is something that reflects in what you want to be. Stories, I don't nurture them, they nurture me. अभी आपने मस्जिद का मेंशन किया है, मैं इसी पे आऊँगी. There was a beautiful हवेली, पास में there was a मस्जिद जिसे कहते थे पंजाबी में बोल मस्जिद. It was a deserted for some time, वहाँ अजान नहीं होती थी, and suddenly one day the azan started. Yes. There was a conversation between you and your sister, और मैं चाहती हूँ audience को पता चले what is the essence of the book and how beautifully you have reflected. There were playful dialogues between you and your sister about the Maulvi. Can we have that reading from the book? I think this is a very beautiful reflection, and if you want to see how Deepti was in childhood, you just have to read, and when you read it, it's the entire picture that's flowing. मैं थोड़ा पहले से पढ़ती हूँ ताकि उसका ये मिले. In 1952, the year I was born, the Masjid was a dark, deserted place since most Muslims in Amritsar had left for Pakistan during partition. No one lived there except for the pigeons,
that fluttered around the blackened dome. And then in 1956, when I was around 4 years old, the first Maulvi returned to the Masjid. My memory of that October day is vivid. The cold was beginning to set in, but we hadn't yet moved downstairs. In the wee hours of the morning, while it was still dark, I suddenly heard a wail. Allahu Akbar. It filled the sky with startled pigeons. Azan, Azan, my father murmured as he got up from his bed and looked over the edge, peering at the masjid. In the dark, he could faintly discern a lone Maulvi standing in the center of the compound, his voice raised in prayer, breaking the silence of the deserted sanctuary. A sudden wind surfed the terraces. Pigeons winged their way up, making primordial circles in the sky. Didi and I woke up, went and stood next to our father. Mama came up the stairs and gazed at the scene below. The autumn wind wafted, stirring dry leaves around the mossy pond of the masjid. A window slowly opened in Raj Auntie's house. Mochi Bhagwan Das ambled into the gully, looking startled. A few more windows opened down the street, framing sleepy faces. People slowly woke up to the muezzin's call that rang out faintly in the dark. Shani's buffaloes were the only ones that remained unmoved. Azan, whispered Mama. Hi, how beautiful. That night, before going to sleep, my father, for the first time ever, spoke about the masjid as he remembered it from his boyhood days. I'm afraid काफ़ी बातचीत है आप लोगों की करने की. This is a book read. That night, before going to sleep, my father, for the first time ever, spoke about the masjid as he remembered it from his boyhood days. Let's request the shorten audience, this sir. session. आप लोग कर लें अपना काम. ठीक है? इसको ख़त्म करते हैं यहीं. I'll just... Audience, please, it's the matter of pride of our I'm city, done. I please. think you've got a faint idea about the book, and I'm happy being here still despite all this, but not used to, at least not literary sessions. Audience, please, I would request if you can maintain this silence. Madam is here for you, and I am sure you all are here to listen, madam. It's a humble request. गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल आयोजन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ. आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है. पीछे जो बच्चे बैठे हैं, यह एक सीरियस सेशन है, एक किताब की चर्चा है, और कितने सारे लोग होंगे जो ज़िंदगी में दीप्ति नवल जी को कभी देखे नहीं होंगे, पहली बार देखेंगे और आगे देख नहीं पाएंगे. कृपया हम सबकी प्रतिष्ठा भी बचाएं और इस सीरियस सेशन को सीरियसली सुनें. आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है. मैम प्लीज़. चलिए कुछ और हल्की फुल्की बातें करते हैं. किताब रहने देते हैं फिलहाल. कोई और, कभी और. बताएं, सुनाएं. Let me hear you all because there's lots to be spoken in the back. बोलिएगा कुछ. I was reading from the book, provided I am allowed to read. There's so much going on. And I'm sure that... It's not my job to keep the audience, give a certain ambience. It's the job of the organizers.
मैं 3 बार बोल चुकी, मैंने चौथी बार किताब बंद की है। उससे पहले 3 बार मैंने कहा है कि आप कर लीजिए अपनी बातें, हम रुक जाते हैं। लिटरेरी इवेंट्स का एक सैंक्टिटी होती है। चलिए कुछ कर लेते हैं और बातचीत थोड़ी सी, पर आप देखिए। आई थिंक मैडम जो कॉन्वर्सेशन है, जब आप उस कॉन्वर्सेशन को बुक में से पढ़ेंगे, यू कुड एक्चुअली फील कि दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन दैट हैपन्स इन आवर हाउस होल्ड्स, और हम शायद बात नहीं करते, वी कीप शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट। Okay, let me. Once the masjid reopened, the notes of the azan went up in the air 5 times a day. The muezzin summoned the people for namaz, but there were no Muslims left in the area to come and pray. I would listen intently to the notes of the azan. They were different from the Saat Sur Masterji had been teaching us in the music class, and almost sounded out of sur to my newly attuned ears. But there was something compelling about the notes. It was as if someone from far out in the wilderness was calling you back home. The off-key notes slowly became part of our lives. I'd even begun to find them musical. Over time, I began to see a few worshippers in the masjid, men in long shirts and salwars wearing tiny white caps. I'd perch up on the chhajja, the edge of the terrace, for a top-angle view of the masjid, my nose pressed to the concrete. We kids were forever curious about the Maulvis who'd hoist up their salwars and wash their gore feet in the pond before they started to pray. Didi, come, look, they are coming out now. They are washing their feet in the pond. See? Such white feet. How fair they are and how fat. What are you girls peering at? Mama would ask, each time she caught sight of us hanging over the chhajja. Look, Mama, their skins are so pink, they look like Kashmiris. Okay, now get down. It's improper. They are Maulvis, pious people. Stop spying on them. My sister and I would constantly look for excuses to go inside the masjid and look around. We would sometimes throw a ball at the dome and then go running all the way around to the Hall Bazaar entrance to ask for the ball back. It seemed like a perfectly valid excuse to enter the mosque, but we never succeeded. All we wanted was to go inside once, just once, inside our masjid as we considered it. We couldn't understand why we weren't ever allowed to step inside. But no, girls weren't allowed. We'd be told firmly. How unfair was that? When I think back, as a child, the magic of the masjid continued to have a grip on me, and I felt a great longing to go inside the holy shrine and explore its forbidden spaces. Once on our return from a holiday, I entered the house, sprinted across the Veda, ran straight up to the terrace, and for once stood stunned. A spotless white dome stood dazzling before me against the blue September sky. Wide-eyed, I gaped. The masjid was no longer dark and weather-streaked. It had been painted white, whiter than anything white I'd ever seen. I was enchanted. Thank you. Thanks. Madam, story sitting has been so beautiful, everything so picture perfect. But I reached to a point that shocked me.
It was your parents' separation. Yeah. Has it impacted you while growing up? No, no, that happened when they were in their 70s. But you have a lot of instances of them. Yeah, I recall the few instances where I was impacted when I could hear an acrimonious argument or an interaction which unnerved me. So I wrote about that. Yeah. I wrote about whatever. The book is honest to the point of everything that happened and I was aware of in my childhood. If I knew reasons why they were arguing, what they were arguing about, that was later, that came later. So it's not in this book. In this book is what impacted me as a child, how I received it, how I maybe became insecure, vulnerable, or stronger, or disillusioned, or whatever the impact of each thing was. But वो उसी सच्चाई से जुड़ा हुआ है जो मेरी सच्चाई थी as a child. My parents did separate in their later age, but that's not part of the book. Yeah. Madam, you have also mentioned about the instances from 1962 Indo-China war या फिर Indo-Pakistan war in 1965. You were fascinated by the war and the settings और किस तरीके से वहाँ पे रेडियो पे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद लाहौर रेडियो पे आप ट्यून करते थे. जब आप न्यूयॉर्क गए 1960, you met a friend. I'm forgetting her name. Munawar. Yeah. Meenu Munawar. Meenu हाँ. Munawar. Yeah. She was from Lahore. Yes. Yeah. इस वॉर के बारे में मैं बता रही हूँ कि 1962 की वॉर जो थी, चाइना वॉर, वो लद्दाख में लड़ी गई और उसके बाद हमें पता था कि लड़ाई हो रही है पाकिस्तान चाइना border in the north, somewhere which was far. According for us, I'm a North Indian, but Ladakh was very far. तो उतना एहसास था कि हाँ कहीं पहाड़ों में है. लेकिन और उस वॉर की रियलिटी हमें पता चली एक फ़िल्म जब हमने देखी 2 साल के बाद. एक फ़िल्म आई हकीकत. उस फिल्म से हमें पता चला कि लद्दाख क्या लैंडस्केप है, किस तरह के पहाड़ हैं, वहाँ डेजर्ट है, माउंटेन है, क्या है, और वहाँ ये लड़ाई लड़ी गई और कैसे हुआ. और गाने तो बहुत मशहूर हुए उसके. मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, वो रोक लेगी मना लेगी मुझको. Those classic songs, you know, from that period. लेकिन जो 65 3 साल के बाद लड़ाई छिड़ गई खेमकरण बॉर्डर पे, तो लाहौर एंड अमृतसर इज़ 52 kilometers away from each other. So that was like, and Khemkaran was even closer. So that reality, the reality of the 65 war was very much, it really charged. I remember the atmosphere was so charged क्योंकि शहर में से हॉल बाज़ार में से पैटर्न टैंक्स की पूरी कतारें जो हैं वो निकल के जा रही हैं बॉर्डर की तरफ, और हम देखते थे. और द women were busy preparing food for the फौजीज़. ट्रक्स को रोक रोक के हमारी मदर्स, aunts, everybody would go and take food for the फौजीज़. The young girls, they would go to the hospital जहाँ ज़ख्मी जो हैं सोल्जर्स आते थे उनके घर पे चिट्ठियाँ लिखनी. तो यंग गर्ल्स और हम स्कूल के जो बच्चे थे, बेसिकली हमें कोई ख़ास काम नहीं दिया गया था एक्सेप्ट कि जब ब्लैकआउट होता है तो आपको खिड़कियों के ऊपर काला कागज़ लगाना है, तो वो जाके ड्राइंग पेपर लेके आओ और उसको वो चिपकाओ, और जब सायरन बजे तो ट्रेंचेस में भाग के ट्रेंचेस में छुपो. बट वी नेवर रियली फॉलोड दैट. कागज़ वागज़ तो लगा दिए, लेकिन जब सायरन बजता था और साबरे जेट्स ऊपर घूमने लगते थे, दे वुड बी वरिंग ओवर हेड, तो हम लोग नीचे ट्रेंचेस में भागने की बजाय हम लोग छत पे भागते थे देखने के लिए कि वो ये गया वो गया. सो वी वेरी एक्साइटेड. सो आई हैव रिटन अबाउट ऑल दैट, माई एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर एज इट वॉज. बट माई फादर, जितने दिन भी वो वॉर चली, 2 हफ्ते चली शायद, 20 दिन चली, माई फादर सॉ दैट this is not what he said. I want to take the girls to the border.
इन्होंने कर लिया, अभी अपना इंजॉय कर लिया जो भी इनका था बच्चों का, बट आई नीड द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड what war really is. And he took us to the Khemkaran border after ceasefire, जब declare हुआ ceasefire, उसके अगले दिन he took us to the Khemkaran border, and that's when I saw images that एकदम मतलब I felt at that time, I felt that from a child I've become a grown up person. I'm a grown up human being now. I can't be a child anymore. ये सब देख के you can never be a child anymore, you know. So that experience of the war, when I, after that, few years down the line, when I went to America and I'm sitting with my Pakistani friend, she's from Lahore, I'm from Amritsar, and we are recalling the same war. We have the same memories, just that I'm on this side of the barbed wire and she's on the other side. But वही images, वही memories, कैसे उनका भी बचपन में वो क्या करते थे, हम क्या करते थे, it was exactly the same. It was so ironical that we shared the same memories, and then we would sit across in Manhattan, बैठ के कॉफ़ी शॉप में बैठ के हम लोग बात करते थे कि why war, why when life was so beautiful. Thank you. मैडम पार्टीशन के बारे में भी आपने काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है किताब में. डू यू थिंक दैट इट हैज़ शेप्ड योर आउटलुक पार्टीशन, बिकॉज अमृतसर वाज जस्ट द बॉर्डरिंग सिटी. या पार्टीशन, माय फादर यूज्ड टू से, पिताजी कहते थे कि कोई पंजाब में कोई नो स्टोरी इज़ कंप्लीट, नो फैमिली is there in Punjab which doesn't have a story of partition behind it. और सही भी था, because there was, my mother came, my parents were in Lahore. My father was studying at the DAV college, he was studying English literature. My mother was studying painting at the BC Sanyal art school. तो वो फादर पहले आ गए थे थोड़े साल पहले, और ममा की जो फैमिली थी, My mother was from Burma, Punjabi family, but born and brought up in Burma. पहले तो वहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 42 में, पूरी फैमिली वहाँ से एक्सोडस ऑफ इंडियंस happened in Burma in 1942, and all the Indians escaped and they had to walk across the Assam hills and come to India. So पहला एक्सोडस बर्मा टू इंडिया हुआ हमारी फैमिली में, और सेकंड जो हुआ जब आके सेटल किए थे लाहौर में, जब सेटल हो गए कि अच्छा अब यहाँ, अब जीवन यहाँ होगा, अब ये लाइफ विल बी हियर, तो पार्टीशन हो गया. एंड देन दे हैड टू रन अवे एंड दे हैड टू सेव लाइफ, एंड यू नो कैसे भागे हैं वहाँ से. कर्फ्यूड नाइट्स, अगेन द सेम ओल्ड थिंग कि कर्फ्यू, और द मैसेकर्स हैड स्टार्टेड इन लाहौर, और कैसे वहाँ से निकल के आए. और वो स्टोरीज़ जो हैं वो मेरे बचपन में मैंने बर्मा की ही स्टोरीज़ सुनी, बिकॉज आई बिलोंग टू एन आर्य समाज फैमिली. तो कोई मंदिर जाना वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग. एक मानते थे प्रभु है बस है, तो ज़्यादा कुछ उसमें ताम झाम था ही नहीं. रिचुअल एक बस हवन होता था, दैट वाज अबाउट इट, और बाकी प्रभु बस हैं. तो हमें मुझे कोई रामायण या महाभारत की स्टोरीज़ सुनने को मिली ही नहीं बचपन में. मेरी जो माइथोलॉजी है वो मामा की स्टोरीज़ फ्रॉम बर्मा, वो मेरी माइथोलॉजी रही. तो मैंने जो स्किल फॉर स्टोरी टेलिंग वो भी अपनी मदर से सीखा, उनको सुन के. सो आई हैव ऑलवेज लाइक फेल्ट कि दैट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग comes to me from my mother, and there is this whole partition and displacement of you know, a body of, you know, people's displacement has played such an important part in the history of my own family that it has always weighed heavy. And then my father decides to migrate by the time we finish school, and I've done 2 years in college. My father decides to migrate to America
and then again starting life all over again. Then I leave America and I come back to Bombay. I mean, I have nobody. I don't know anything about show business. Again, there's this whole, shayad wo ability to start life all over again in an unknown place with nothing, शायद वो मेरे genetically शायद अंदर से आता है. So I'm kind of unafraid to venture. शायद. Thank you. एंड मैडम जो माइग्रेशन अमेरिका टू इंडिया होगा, आई थिंक वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. Yes. बताना पड़ेगा लगता है. Everybody is waiting for it already. Eagerly waiting. मैडम, यू हैव बीन ऑलवेज अ ड्रीमर. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पैक्ट किया. you've written दीप्ति नवल, अमृतसर, इंडिया, यूनिवर्स on the pillar of your house. Space. Finally. Yeah, एक मेरा, हम लोग, I think it was 1954, right? जब when the first man landed on moon, उससे पहले तो हम लोग चांद को देख के बस हिंदी फिल्मों के गाने ही चांद के साथ रिलेट करते थे. सोते थे छत पे, चांद वांद को देख के, और ट्रांजिस्टर पे गाने चलते रहते थे. And that was our relation to the moon, is through Hindi film songs. चांद फिर निकला and so many of those songs. But then the first man lands on the moon, 1964, and Neil Armstrong, and the newspapers are saying man's first step on the moon. And I remember going to sleep that night, and I couldn't sleep because I was looking at the moon with new eyes. You know, it was completely a total change of equation with the moon. The fact that human being can go there, can reach the moon and step on the moon and land up on the moon. I mean, it was something. तो उसके बाद मैंने अपने घर के जो पिलर था, बरामदे में जो पिलर था, उसके ऊपर मैंने अपना एड्रेस ऐसे उसके ऊपर नीडल, मामा की निटिंग नीडल से एनग्रेव करके लिखा, दीप्ति नवल, कटरा शेर सिंह हॉल बाज़ार, अमृतसर, इंडिया, क्या बस यूनिवर्स. एंड देन इट एंडेड विथ स्पेस. कहीं कहीं आप एक तिपका सा, एक हल्का सा कुछ हैं कण कोई, you know, इस ज़मीन पर. बट द पर्सपेक्टिव वॉज फ्रॉम स्पेस से लेके, एंड देन बट ओपनिंग फ्रॉम हियर एंड देन गोइंग ऑल द वे आउट टू स्पेस. सो दैट काइंड ऑफ दैट माई फादर रिएक्टेड टू दैट. इन अमेरिका ही टोल्ड मी, ही सेज, बेटा मैंने वो आपका वो लिखा हुआ देखा था, और मैंने उसी वक्त मन बना लिया था कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे. We will migrate. I must open up a wider horizon for my children to grow and to groom themselves and give them a wider horizon to पनपने के लिए. मैडम, अभी आपने कहा कि एक दिन का एक कण हूँ मैं. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, एंड स्टिल देयर इज लॉट लेफ्ट फॉर यू टू कॉन्कर, एंड वी लुक Thank फॉरवर्ड you. फॉर दैट. Thank you so much. Thank you. Still as young as evergreen. Madam, Let's, if anybody. yes, we can take questions from the audience as well. We can start with the women power first. How many minutes do we have? ये session कितना? 10 minutes? So 10 minutes, let's have a chat with the audience. Read out something? Okay. Poem नहीं इसमें. Ma'am, you can. Yes. Can we have this book read and then we'll take the question? Thank you. मैं एक दो पेजेस हैं, फिर आप अगर, because this is an image, this is my favorite image from my childhood, one of the favorites.
There are many favorites. One Diwali night was particularly eventful. I would later remember it as the blue frock fiasco. I must have been around 7 years old then. In preparation for Diwali that year, Mama had cut out from Women in Home a beautiful picture of two little girls, white girls wearing identical frocks. The frocks were a rich, deep blue with gathers at the waist. Dainty, white lace frills hung off the edges of the collars and sleeves. Mama wanted the exact same blue frock stitched for Didi and me for this Diwali. तो आई डिस्क्राइब कि कैसे वो मामा वो कपड़ा लेकर के रंग वाले के पास गई. मैं रंग वाले को बचपन में कलर सिंह बोला करती थी. इन माई हेड आई हैड अ नेम फॉर हिम. ही वॉज कॉल्ड कलर सिंह. जैसे कि सामने एक गाय भैंस का तबेला था. तो मैंने सब बफलोज को मैंने उनको सबको एक नाम दिया हुआ था. मेरे लिए सबका एक नाम था. दे वर नॉट नोबडीज, जस्ट बफलोज. नो, ईच वन हैड अ नेम. कोई ब्राउनी थी, कोई गंगो, कोई चार्ली, कोई भूरी, मतलब इस तरह से नाम थे. तो वो सामने जो बफलो शेड है वहाँ से तो इस तरह के जो नाम वाम, तो कलर सिंह के पास मामा लेके गई और उन्होंने कहा कि ये ब्लू, और वो मैगज़ीन भी लेके गई साथ में कि ये पर्टिकुलर ब्लू. माय मदर बीइंग अ पेंटर सेड, you know, this is Prussian blue. And he said, Hanji, Bibi ji, Hanji. And he said, I want the same blue, Prussian blue. The day of Diwali, I was very excited. और फिर सामने जो दर्जी था सरदार टेलर, उसको दे दिया गया वो ब्लू रंग करवा के कि आप स्टिच कर दो, एक दिन में दिवाली है, 2 फ्रॉक्स बनेंगी, एक दीप्ति और एक बॉबी एंड डॉली, you know, we were called. The day of Diwali, I was very excited. Every now and then, I'd run to the thada to check if the frocks were ready. Day turned to evening and evening came to be night. But this Diwali night, the frocks did not get stitched on time, though the darzi stayed up till late, working on them, little blue strips scattered all around him. Both Didi and I waited. I walked up to the terrace and leaned over the edge, looking down at the mochi dwellings. How beautiful their homes appeared, lit with oil lamps, and the sound of their nightly dholak more rigorous, the singing more intense. The mud houses glowed with freshly coated walls and the white powder motifs painted on the thresholds and around windows. The scene looked like it was out of a picture book. Yet, despite the lamps and the rangoli and the music, there was something sad about this Diwali night. On our terrace, we had not lit the candles. As the night wore on, the festivity around us began to fade. The firecrackers that had lit up the sky a while ago, creating a fantastic backdrop for the white minarets of the mosque, had dwindled to a handful of flashes here and there. Children around the neighborhood had finished bursting the last of their crackers for the night and were now going back inside their homes. The old Sardar Darzi, sitting on the wooden stool, working away in his modest establishment, giving the finishing touches to our frocks by hand. His was the last shop still open in the street. Both Didi and I were quiet. Mama stood at the thada with us, sharing our disappointment. All the iron and wooden shutters of the shops on our street had clanged shut, a finale to the Diwali night. We came back inside, time for us to change into our pajamas and get into bed. This Diwali night was gone forever from our lives, uncelebrated. Suddenly, there was a knock on the phatak. Without pausing to think, I ran to open the main gate. I perched on my toes to push up the iron latch so the small gate could be released open. In my heart, I knew whoever was knocking on our door at this hour could only be God sent. Sure enough, there he was, the old Sardar Darzi standing in the dark, his face frayed and tilted to one side, both his arms stretched out. My eyes lit up at what I saw. Our very own Messiah, his grey beard and white turban glowing in the light of the street lamp, the Savior himself. In his hands, he held 2 hangers on which hung frocks of the most brilliant blue I'd ever seen.
The old tailor's face had a faint smile of regret and benediction at the same time. I looked at the frocks and then at him. Didi came from behind and stood next to me. There we were, two little girls, misty-eyed, gaping at the old man who stood Jesus-like, blue color dripping from his palms. Mama quickly changed us back from the pajamas into our new blue frocks. That Diwali night, we were the last two girls on a terrace, lighting firecrackers, invoking the gods, illuminating the dark skies. Thank you. Thank you. Can we take questions from the audience from this side first and then we'll come back to you? Any questions? Can we give the mic to her, please? Yeah. हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। और मैम आपकी किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, उसके बारे में भी मैंने मतलब यहाँ देखा, मगर आप शानदार पेंटर भी हैं, आपकी पेंटिंग्स मैं देखती रहती हूँ। तो आपने बताया कि आपने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं है, तो पेंटिंग भी कहीं सीखी है कि मम्मी से इंस्पायर होकर बनाई? नहीं, मामा से सबसे पहले सीखी, बिकॉज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड शी वुड पुट मी ऑन द डाइनिंग टेबल, मेक मी सिट एंड शी वुड टीच मी हाउ टू स्केच। और उसके बाद जब मैं टीनेज ईयर्स में आई तो मैंने अमृतसर में एक ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी है, बहुत मशहूर पेंटर हैं जिन्होंने सोनी महिवाल की क्लासिक पेंटिंग बनाई है। सोनी महिवाल जिन्होंने बनाया, ठाकुर सिंह जी, उनकी गैलरी में मैंने सीखी। एंड देन ऑफ कोर्स इन स्कूल, बिफोर दैट इन स्कूल देयर वाज सिस्टर गेब्रियल हु टॉट मी पेंटिंग। ऑल द नन्स इन स्कूल were from, you know, of the Belgian congregation, so they were all European nuns that who brought me up. तो मैं डॉक्टर कुमुद सिंह, मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की हेड हूँ अयोध्या डिग्री कॉलेज में, तो मुझे बहुत इसका वो थोड़ा सा था कि थैंक यू मैम। Any question from this side for madam? Of course, when I went to New York, painting was my major subject. I graduated with painting as my major. जी नमस्कार। दीप्ति नमस्ते। जी, नमस्ते। आप तो कई को स्टार्स के साथ काम की हैं और एक से बढ़िया एक मीनिंगफुल सिनेमा हम लोगों को दी हैं, तो कुछ उन दिनों को याद करते हुए अपने किन को स्टार्स को आप खास तौर से याद करना चाहेंगी इस अवसर पर? मैं मतलब मुझे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट या जिनके साथ मैंने काम किया, जी जी, हाँ, मैं सबसे ज़्यादा काम मैंने फारूक शेख साहब के साथ किया, और क्योंकि 7-8 फिल्में हम लोगों ने एक साथ की, एंड वी वर वेरी easy to work with each other, we were very comfortable working with each other, but I was very fascinated working with Nasiruddin Shah. I always wanted to do more films with Nasir. वो मेरे फेवरेट एक्टर भी रहे हैं, अभी भी हैं शायद फेवरेट ही, और भी कई यंगस्टर्स आ गए हैं जो मेरे फेवरेट बन चुके हैं, लेकिन नसीर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करना। 2-3 फिल्में मेजर हमने की, और फिर कुछ ऐसे हमने रोल्स किए जो फिल्मों में हम लोग एक साथ सीन्स नहीं कर रहे थे, बट वी वर इन द सेम फिल्म्स टुगेदर, नसीर। एंड देन आई ऑल्सो एन्जॉयड वेरी मच वर्किंग विद ऋषि कपूर। एक मेरी फिल्म थी ये इश्क नहीं आसान, पता नहीं किसी ने देखी कि नहीं, लेकिन यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे इश्क नहीं आसान, आई थॉट ही फर्स्ट ऑफ ऑल चिंटू ऋषि जी वॉज अ वेरी फाइन एक्टर। वी वर द सेम एज, you know, we were both 52 born, and so we related to the same things, the same songs, and you know, so he was a very fine actor. He was a very hard-working, and acting, the way I saw him, how acting came to him so easy, you know. तो वो मैंने फारूक और मैं जब काम करते थे तो हमें लगता नहीं था कि हम जा रहे हैं काम पे और हमने कुछ करना है सीन। हम जाते थे, वी यूज्ड टू जस्ट हैव अ गुड टाइम। सही प्रांश पे की फिल्म हो या साथ साथ हो या किसी से ना कहना या रंग बिरंगी, मतलब वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम, और हंसी मजाक में पूरा दिन हम लोग काम करके वापस आ जाते थे। इट नेवर वाज अ बिग डील।
नसीर के साथ थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता था सीन को। थैंक यू। नहीं, मेरा ऐसा डायलॉग है नहीं कोई जो मैं ऐसे डायलॉग बाजी कर सकूं। हाँ, चमको तो सब जानते हैं। प्लीज़ आप मेरी ठहरिए, मैं एक सेकंड। चमको सबको पसंद है, ओके, लेट्स टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सभी को पसंद है, लेकिन मेरी कुछ और भी फेवरेट फिल्में हैं, प्लीज़ देखिए। अनकही, मैं ज़िंदा हूँ, ओके, ये इश्क नहीं आसान इज़ वन ऑफ देम। लिसन अमाया, मेमोरीज इन मार्च, एंड लीला, वेर आई प्ले दिस NRI वुमन, है ना? विच वन? जुनून में क्या, मैं तो 1-1.5 सीन है उसमें तो मेरा। कमला, मतलब मैं वो कथा, ऑफ कोर्स आई एम सेइंग के फारूक की फिल्मों के अलावा, फारूक की और मेरी फिल्में तो सब ने देखी। एक बार फिर ऑल्सो उसका कोई प्रिंट नहीं है अवेलेबल, वो फिल्म हम भी ढूंढ रहे हैं उस फिल्म को, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। इट वॉज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म, अ बिट ऑफ अ फेमिनिस्ट स्टेटमेंट भी थी वो, एक तरह की। उस ज़माने में इट वॉज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म। Madam has been waiting for a question from quite a time. श्योर। मैम, आप अपने एक इंटरव्यू में कह रही थी जब बहुत कुछ कहने को होता तब कुछ भी नहीं कहने को होता, और आपके आई कांट लेट यू पास दैट ऑफ। वो लाइन है, जब बहुत कुछ कहने को जी चाहता है ना, तब कुछ भी कहने को जी नहीं चाहता। क्या बात है मैम, आपने काफ़ी सारी फिल्में की, पंचवटी, कमला, ये सब फेमिनिज्म को अपील कर रही थी। उसके बाद आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपको झंडा गाड़ने वाला फेमिनिज्म नहीं पसंद आता। नहीं, मैं कह रही थी कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट, आई एम जस्ट क्वाइटली इंटरनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मेरा जो प्रश्न है मैम कि आप एक ऐसे फैमिली से हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत सशक्त रही और आपको किरण बेदी ने पढ़ाया भी है, तो फिल्मों में नहीं पढ़ाए नहीं। शी वॉज जस्ट 3 years सीनियर इन माई स्कूल। शी वॉज अ सीनियर, और जिसको हम लोग अपने सीनियर्स को पूछते ही थे, मतलब ये वो ज़माना था, सीनियर्स आते थे तो आप खड़े हो जाते थे। सीनियर आपके सामने से निकल रहे हैं तो यू वर जस्ट स्टैंडिंग अटेंशन, जैसे कोई सिस्टर या नन निकल के। तो इन आपके सामने सशक्त डांट की किरदारों जा का रही। फिल्मों के चयन में क्या योगदान रहा है मैम? किसका? जो आपके घर में महिलाएं रहीं, बहुत सशक्त रहीं, तो इसका फिल्मों के चयन में क्या योगदान रहा है? आई थिंक जब आप मेरी फिल्में देखेंगी, अगर आप मेरी जो फिल्मों की लिस्ट है वो देखें, तो आपको मेरी चॉइस ऑफ फिल्म से थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि इवन व्हेन आई प्ले अ रोल लाइक कमला, who is a doormat really, but the film, the statement the film is making is a major statement. वो फिल्म जो कहे कि देखिए आज भी औरतों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, यू कैन बाय अ वुमन फॉर 260 रुपीज़ फ्रॉम इंटीरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश और some such प्लेस इन इंडिया, मतलब ये फैक्ट है। वो कमला वॉज अ रियल स्टोरी। हाँ, तो उसमें मुझे कमला प्ले करने में कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज फिल्म जो मैसेज दे रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि एक फिल्म की थी मैंने, घर हो तो ऐसा, उसमें एक लड़की आती है और वो उस घर में शादी करने से पहले उस घर को सही बराबर करती है आके। तो उस घर की पहली बहू जो है वो मैं प्ले करती हूँ, एंड शी इज़ माई फ्रेंड, एंड आई एम द वन हु इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इन दैट हाउस। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको इस तरह का रोल नहीं कर सकती हूँ, कमला प्ले कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि द फिल्म का जो मैसेज है वो इट शुड बी फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन, नॉट द अदर वे अराउंड। पंचवटी मेरी बहुत फेवरेट फिल्म इसलिए है कि पंचवटी में आई प्ले दिस पेंटर, शी इज़ फ्रॉम नेपाल, शी डज़ ठांका पेंटिंग जो मॉनेस्ट्रीज़ में, टेम्पल्स में की जाती है, यू नो, फ्रेस्कोज एंड ऑल दैट, तो जो दीवारों पे ठांका पेंटिंग। और
वो करती है और उसकी शादी हो जाती है, एंड शी देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड हर, एंड देयर कम्स अ पॉइंट वेयर the relationship becomes physically violent. So that is the time. She's very quiet. She's not somebody, वो ऐसी औरत नहीं है, लड़की नहीं है जो अपना अस्तित्व ढूंढ रही है. उसे मालूम है अपना अस्तित्व, पता है. ये फिल्म उसका अस्तित्व ढूंढने में टाइम नहीं लगाती. फिल्म के शुरू में ही शी नोज़ हु शी इज़. शी मैरीज विद ग्रेट फेथ कि मैं ऐसे घर में मेरी शादी हो रही है जहाँ सेंसिबल लोग और सही सेंसिबिलिटी वाले लोग हैं. तो जब वो सही नहीं होता, एंड व्हेन इट बिकम्स फिजिकली अ सेल्फ डिमीनिंग पॉइंट पे जब आती है बात, सो शी सेज ओके, टिल दिस आई हैव ट्राइड बट नो मोर. आई एम नाउ ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस marriage because it is going downhill only now from this point. So she backs off. And then she gets into not a relationship but an encounter with a man who she really looks up to. And when she conceives from that man, she says, I'm not leaving one man to latch on to the next. I'm going to live on my own terms. I'm going to live by myself. If I have a child, I will give birth to my child. And I will look after. I will not look for कि अब किसको पकड़ूं. और you know, that message I thought was that I feel कि as a woman I feel closest to the character in Panchvati. Her name is Sadhvi, and in her thinking, in her belief, in the way she carries herself, in her inner strength, I completely relate to her. I don't much relate to the sweet girl next door. आप लोग मेरे ऊपर थोपते रहते हैं ये लोग. हाँ मतलब मुझे, हाँ कोई बात नहीं. मैडम मैं राजेश रेड्डी हूँ, बॉम्बे से आया हूँ. मेरा मुशायरा कल है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपको सुन पाया, देख पाया. ज़बरदस्त फैन आपके रहे हैं हम शुरू से. अभी आपसे किसी ने पूछा था कि कोई डायलॉग सुनाइए. मैं उसी सिलसिले में अपना कमेंट करूँगा, उसके बाद आप चाहें तो कुछ बोलें. कि दीप्ति नवल मेरे ख्याल से हिंदी फिल्मों की पहली आम लड़की हैं. हिंदी फिल्मों की पहली आम लड़की हैं जो डायलॉग बाजी और क्योंकि फिल्मों में लड़कियां तो होती हैं वो, लेकिन वो फिल्मी लड़कियां होती हैं, वो फिल्मी लड़कियां होती हैं. आप पहली हीरोइन रही हैं जिनकी लगातार फिल्में ऐसी आई हैं कि वो आम लड़की, हिंदुस्तान की आम लड़की जो कहीं भी मिल जाए और जिनसे आप कहीं भी रिलेट कर सकें. तो मैं इसलिए आपको शुक्रिया अदा करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आप इस वक्त हिंदुस्तान की पहली आम लड़की के सामने हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. माई ओनली थिंग इज़ कि ये जो आम लड़की आप कहते हैं ना, इसको आपको रीडिफाइन तो ज़रूर करना पड़ेगा. रीडिफाइन तो करना ही पड़ेगा. जी कम नहीं, माइक नहीं उनका चल रहा है. आप बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए. हेलो हेलो. हाँ आ रही है. तो मैंने आपकी पोएम्स भी पढ़ी हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लिखती हैं, इतनी खूबसूरत अदाकारी भी करती हैं और पेंटिंग भी बनाती हैं. तो मैं जानना चाहती थी कि आपको कौन सी किताबें हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं? कौन सी किताबें, बुक्स, किताबें आपकी फेवरेट जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो? किताबें तो काफ़ी सारी हैं. आई थिंक कुछ राइटर्स, कोई मतलब ऐसे मुझे सबसे पहले याद है माई मदर. आई वुड सी हर सिटिंग, वो मूड़े पे बैठ के विंटर्स में धूप में बैठ जाती थी और वो बार बार वो किताब वापस निकालती थी लाइब्रेरी से और पढ़ती थी. हेमिंगवेज ओल्ड मैन एंड द सी. हाँ, तो वो भी मुझे मेरी शुरू की रीडिंग में ओल्ड मैन एंड द सी तो है ही है. देन आई रेड so many poets also, Neruda, and so many I among in contemporary literature I would say Garcia Marquez,
Gabriel Garcia Marquez. I'm a big fan of Salman Rushdie. I love Arundhati Roy. मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं मैं पहले उनसे ही स्टार्ट करती हूँ. देन ऑफ कोर्स आजकल मैं मुराकामी, इससे पहले बेन ओक्री. तो मुराकामी की किताबें मुझे बहुत पसंद हैं बिकॉज आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग. आई एम डिस्कवरिंग नए राइटर्स में. सो इस तरह से कई कुछ है. ऐसे कोई एक या दो फेवरेट नहीं कहा नहीं जा सकता. Madam, what a wonderful session this has been. थैंक यू. थैंक यू. जी हाँ हाँ बोलिए. इस वक्त सिनेमा और टेलीविज़न की दो सबसे इमोशनल फेज के पर्सनालिटी मौजूद हैं. दीप्ति नवल जी सिनेमा और ऋचा अनिरुद्ध जी टेलीविज़न के. मैं एक अलग तरह की सिमिलरिटी देखता हूँ दोनों फेज से. अभी थोड़ी देर पहले हमारे सेशन में एक था कि साहित्य और नॉस्टैल्जिया. हम वहाँ से सफ़र पूरा करते हुए इस वक्त पहुँचे हैं और मेरा ख्याल है कि सिनेमा की एक पर्सनालिटी अब बैठी हुई हैं. हम चाहते हैं कि थोड़े से प्रेजेंट पे भी हम आ जाएं. आप शोर जो हॉल में हो रहा था आप विचलित हो गई. सिनेमा एक क्रिएटिविटी का माध्यम है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो फिल्मों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो एक ख़ास तरह का शोर उठा हुआ है. हर कुछ दिनों बाद एक शोर फिल्मों के अगेंस्ट जो है जो सेंसर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? थैंक्स. एज पता नहीं क्या कहना चाहिए. मैं अपने आप को इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही समझती हूँ, लेकिन आजकल कुछ दोबारा से कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, इनसाइडर आउटसाइडर ये वो सब तरह की. तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में मुझे पता नहीं है इतना. बट बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आई कैन से कि इंडस्ट्री को जैसे कि एक टारगेट किया जाता है, ऐसा कुछ दौर चल पड़ा है. पता नहीं कब तक ये रहेगा. बट पीपल वो जो एक मैजिक और कितना एड्यूलेशन हम लोगों के मन में होता था फिल्मों के लिए और फिल्म के लोगों के लिए, वो सब आजकल लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी कहा जाता है और इंडस्ट्री को थोड़ा सा टारगेट किया जा रहा है. तो थोड़ी देर पहले तक तो ये था, मैं देख रही थी. अब पता नहीं ये थोड़ा सा संभला है कि नहीं, आई डोंट नो. लेकिन बहुत मुश्किल लाइन है ये, बहुत मुश्किल ये प्रोफेशन है. इसमें बहुत जान लगानी पड़ती है. इट्स नॉट ईज़ी. आप रात को 2:30 बजे सीन शूट कर रहे हैं, आपको नींद के मारे बुरे हाल हैं. यू वांट टू just put your head somewhere and get some sleep, and you have to look bright and chirpy, and you have to do सारा ये सब कर. I mean you know it's a you have to work very hard. अगर इतने फालतू के लोग इंडस्ट्री में होते, मेहनत वाली इतनी बड़ी बड़ी फिल्में या कह लो कि मेहनत वाली छोटी फिल्में, बड़ी फिल्में, मीडियम फिल्में कैसे बनती? People have given their lives to cinema और people have taken big risks with their. लोगों के घर बिक गए हैं सिनेमा के लिए. लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने पैसे लगाए, फाइनेंसर्स ने क्या क्या. आई मीन इट्स यू हैव टू डिवोट योर लाइफ टू दिस प्रोफेशन, तभी आप इसमें कोई अपना नाम कमा सकते हैं. इट्स नॉट ईजी. सो जिस आसानी से फिल्म वालों को आजकल बुरा भला कहा जा रहा है, वो मैं समझती हूँ बहुत ही गलत है. आपका कोई प्रश्न है? जी. अभी आप सबों ने दीप्ति मैम के किताब का बुक रीडिंग सुना है. मैं आयोजन समिति की तरफ से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, कल दीप्ति मैम रहेंगी, राजेश रेड्डी जी जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ
अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है आप लोग नज़्में भी सुन पाएँ। मैडम कल जो कवि सम्मेलन है उसमें आपकी एक दो नज्म सुनने की हम लोग इस हॉल को उम्मीद देना चाहते हैं। मेरी तो कल फ्लाइट है, सुबह 10:20 की बोर्डिंग है। परसों है ना? परसों कल है। कल है 8 तारीख 9th को थी। आपने पहले नहीं बताया? 9th को थी। नहीं, अच्छा चेंज हो गई मैम, 9th को है। कल है 8th है। आई वुड हैव लव टू स्टे बैक। सहवाल जी, क्योंकि मुझे कल की है या परसों की है? परसों की है। कल की क्या सुनाना है ज़रा फिर से क्लियरली? मैंने वो 2 नज्म सुनानी है। कोई भी नज्म, कोई भी ये अच्छा, एक थोड़ा मुझे मतलब नॉर्मली मैं आपका मन थोड़ा सा बदल देता हूँ। राजेश रेड्डी जी बैठे हैं, इनका एक मशहूर शेर है, मेरे दिल के किसी कोने में बैठा एक मासूम, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ठीक उलट आपकी ये किताब है। My book is a celebration of childhood, and I'm sure many people here will be able to relate to that celebratory part of childhood, because that time never comes back and it's unmatchable. तो मैं कुछ ट्राई करती हूँ एक नज़्म। छोटी सी एक। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें, अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए सवालों के दायरों से निकलकर रिवाजों की सरहदों के परे हम यूं ही साथ चलते रहें, कुछ ना कहें। तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज़्म न दोहराऊं, तुम कौन हो मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दें, कुछ ना कहें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें। थैंक यू। I think what a wonderful session this has been. Thank you so much, ma'am, for gracing the session. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. I think madam is getting क्वेश्चन बोलिए। Could we please give him a mic, please? Please. नहीं अभी छोड़िए। कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? Could we please give him a mic, please? He wants to ask. Thank you so much. इतनी अच्छी नज्म के बाद अब प्रश्न का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप जिद कर रहे हैं। Yeah, definitely.
जितने लोगों को ऑटोग्राफ लेना है बुक पर, वो लोग अभी ले लें। ये साइनिंग सेशन अभी खत्म हो जाए। ऑटोग्राफ जिनके पास भी किताबें हैं और ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं वो अभी ले लें। और बहुत ही खूबसूरत सत्र का आयोजन दीप्ति नवल जी के साथ। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी से। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पे अब अनुपम सहाय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अगले सत्र का संचालन करें।